have to go for after the engineering, because there will be no enough time you'll get to decide after getting the engineering degree. So because the competition is very high, so you define your plan and define immediate and ultimate goals of your careers. Yes, if you want to be a successful engineer, if you want to be a successful technocrat in your life, you should define immediate and ultimate goals, what you have to go for it. Like, make a roadmap to execute in a most effective manner. Yes, you have to make a roadmap to execute in an effective manner. Being an engineer, you should understand the importance of planning and execution of the plan. Look, planning is a very important part of our engineering, and you must be aware that when an engineer with a managerial skills means an MBA degree, it's a very good combination, because the planning is a very important part. But apart from that, the execution of that plan is also very important. So what is the thinking of this technocrat world is that an engineer have an inherent skills of planning and the execution of that plan. So this should be your study regime. What is GATE? First of all, we have to understand, we have to see what is GATE. The graduate aptitude test is in engineering. That is very important to understand. See, this is an all Indian, this is exam conducted in all over the India, and national level exam. And see, it's very important. You see the old papers there. You will not find any question which is repeated. Maybe the theme will be the same, but what is the unique point of this examination, that they will not repeat any question. It's same data, and it's a very important examination, and everyone recognize this examination. Yes, it is administered and conducted in 8 zones across the country. And what the GATE committee comprises of, that is very important to know. Look, the people in the GATE committee will be from IIT, 7 IITs, and ISC Bangalore, that is National Conducting Board, NCB, and Department of Education at MHRD, Government of India. Now this has been changed now. The name has been changed as per the new name given today. So this is a brief introduction about the GATE, what is GATE and how it is organized. These are the zones. GATE exam conducting zone. There are 8 zones. See, zone 1 is the ISC Bangalore. Zone 2 will be the IIT Bombay. 3 is IIT Delhi. Zone 4 is IIT Guwahati. Zone 5 is IIT Kanpur. Zone 6 is IIT Kharagpur. Zone 7 IIT Madras. Zone 8 is IIT Roorkee. Now, why we should go for the GATE? Look, all of you are GATE aspirant. You want to appear in the GATE examination and you want to correct the GATE examination. But why? Why you want to do this? You should be specific, and you should be very specific in your mind that why we are appearing for the GATE. Look, everyone is appearing for the GATE. Is not a thing that you will also appear for the GATE because my friend is appearing for the GATE and okay, we'll get this out of this. And this is not the case, because once you are getting into the master's degree, you are confining your approach, you are confining your path. That is very important to know. Look, after doing the GATE, okay, I'll go for this, I'll go for this. No, this should not be done. If this will be the idea or attitude, then definitely it will have a worse effect on our career. So we should avoid it. So why we should go for the GATE? We have to understand that GATE is a entry for the GATE master's degree and for the PhD doctorate degree. Look, MTech and PhD basically related with the research and the teaching. So when you are getting into the GATE, your idea should be like that. Okay, you are prepared to be in the research or in the teaching field. That is one must be very clarify about their thinking. So like MTech degree leads to specialization, means like you are electrical engineering. So there are so many electrical specialization offering by the NITs and IITs. Like in our institute, NIT Bhopal,
MNIT Bhopal, we are offering two specializations, that is power system and electrical drives. So many other specializations are available in IITs and NITs like instrumentation, control, or you can say power electronics, and so many things are there. That is a specialized course, not a like a undergraduate course. It is a specialized course. There you your idea and your thinking should be research oriented. So this will lead to a specialization. MTech degree, yes, we have discussed also like that. MTech degree is the best for those wishing to apply for a faculty or research option in education institute and R&D centers. Look, you should be very clarified. Look, in India, what is happening? If you don't have any job, you go for teaching. And teaching, there is a requirement of research. That is why you're going for the research. But this is not a good idea. Good idea. It is saying like that. You should be a very good research. You should be very good in research. You should be a good researcher, and then we go for the teaching purpose like a faculty. Because once you have a very good skills or with your very good hands-on research, then only you can be a very good in the profession of faculty or teaching. And like another part of the coin is that more and better company recruits from the leading institute. Now what is happening in our time, it was not like that. Nowadays, if you appear for the gate, you should have a good, you will get a good gate score, and on the basis of gate score, you apply in the better companies. There you'll get a call, and directly they will conduct the interview. This is a good opportunity, which is another avenue that is created by the gate. They will get a good job. So gate is an entry for PSU like bar, BL, ONGC, and OSC. Now what now what is happening? This bar, BL, ONGC, and ISC are not coming for the campus recruitment directly, because what they are saying that will see the gate score, and the student will apply from on the basis of their gate score and will directly call for the interview. This is the now this is what that is happening with them. Yes, it is higher salaries are offered to the MTech holders as compared to the BTech and B. Look, in the entry level, maybe this is not possible. MTech or BTech guy will get the same salary, but after getting confirmation or absorption in the same company, you will definitely get the advantage of your master's degree, and definitely you'll get a good good opportunity over a BTech undergraduate candidate for the further promotions and your for the career. So this should be your idea in your mind, that if I am appearing for the gate, so I should be ready to go for research and for a teaching purpose, or I'll go for like companies, PSC companies. Not every company is just allowing for the gate score, but not every, but like good companies, IOC, ONGC, BAG, BL, other companies, NHPCL, and these all companies are just getting the their trainee from the gate score. So this should be your idea, and if you are comfortable with this, then only you appear for the gate. But if you are also this is my idea. If you have another idea, but if you appear to judge your skills in the engineering, then also you can appear in the gate examination, see how much you know about the technical skills, and get the score, and then okay, whatever you want to go, and go for it. That is again a good idea. Yes, this is the best part. I think 80 or 90% students are looking for it, because if after getting the engineering degree, they will go for the GEAT or for the MTech, because for 2 years they will get a scholarship, and meanwhile they will prepare for some other examination and get into that. Yes, this is the idea. Yes, but this should not be a primary objective. This should be the secondary objective. But you should be very clarify in your mind that what is the outcome, what should be the outcome of this particular course. Yes, scholarship is paid during the MTech examination, so the student can easily afford their needs. Yes, that is very true, and the scholarship is a very good scholarship. Yes, if you are appearing for the GATE,
basically there will be a master's course comprising of 4 semesters, means 2 years course. And if you are appearing, if you are getting admission in the MTech through the GATE, yes, GATE is mandatory now. Now, if you are getting a scholarship, then you should have a valid GATE score. What is meaning? What is the meaning of valid? Means what? You should, means or last 2 or 3 years GATE score should be there, valid. So this is a means the 4 semester program. There you'll learn about the specialization of your electrical engineering, in which you are opting. Okay. Some colleges and institutes specify GATE as a mandatory qualifying even after for the admission of self-financing student. Yes, that is also true. Some industries and foreign universities have indicated their interest in GATE qualified candidates. Yes, this is again because I am in my institutes. In my institute, I'm looking after this training and placement office also, and there I have seen that so many of my students got a very good opportunity in abroad, and because of their GATE score. So this is again a good opportunity, a good way to enjoy. The GATE qualified candidates in engineering discipline are also eligible for the award of JRF in CSI laboratories. See, now what I'm saying that if you're not if you don't want to go for like MTech program, then you can also join GRF. GRF, okay. After GRF, there will be another appointment of SRF, that is Senior Research Fellowship. And see, directly you'll get admission for MTech and PhD degree. This is again an opportunity for the GATE after doing the GATE. So this is all about the why we should go for the GATE. Okay. Now, why means why this department is conducting the GATE examination? What are their objective? Why they want to just organize this GATE examination? Yes, because they want meritorious and motivated candidates for admission to postgraduate program in the engineering technology, architecture, and pharmacy at the national level. See, this is very important for them because they have to identify. There are so many colleges in India. Now they have to clearly identify the students where, because education policy has not changed. Now you see, now a new education policy is there also, and there our honorable Prime Minister, another thing they wants that our policy should be like that it should avoid a spoon feeding. Like what is happening when we started our career from the childhood, a spoon feeding is like a very biggest disadvantage. Like what the faculty come into the class, prepare a lecture and just deliver the lecture and just finish. No, it should not be like that. I think our class should be interactive. So for that purpose, they want a meritorious and motivated candidates, so that because their idea is that once you are into the postgraduate program through the GATE, then you will be most of them will be the faculty or in the research, so that their idea will be like that these students, these candidates will be a good option for them, so that they will produce more and more very good students across the country. Yes, to serve as a benchmark for the normalization of the undergraduate engineering education in the country. Yes, this is also true. So that is why the GATE is planned, and this is the ultimate objective of the GATE examination. Okay, you must be aware that these all are the GATE criteria, eligibility criteria for the appearing in the GATE examination. Yes, if you are BTech, if you are BTech, B Pharma, then these are the criteria that 4 years after 10+2 or 3 years after BSc in Diploma in Engineering Technology. Those who are in the final year of such programs, that these students are eligible for for appearing in the GATE examination. Yes, architecture is also allowed, and it's 5-year course. BSc Research and Bachelor of Science in the Science Post Diploma 4 years plus 10+2. 10+2 is mandatory.
MSc, MA, MCA or equivalent, they are also eligible for appearing in the examination. Master's degree in any branch of the science, mathematics, statistics, computer application or equivalent. Integrated course. Now there is integrated course are available in so many universities. So these are also eligible for appearing in the GATE examination. Integrated MTech dual degree also eligible. Professional society examination like MHRD, UPSC, like AMI by Institution of Engineers, they are also eligible. So, like maybe you all the participants are maybe from different streams. Electrical engineering, that is okay, but from the different, they are getting their degree from different streams. So this is the eligibility criteria for appearing in the GATE examination. These are the code like for electrical engineering, that is double E. Yeah, number 10. That is for us, double E. That we can appear in that also. This is an application process. I think this is for the last year. I'm sure that it's the same for this year also. They will notify that now the GATE applications are open to fill in September. You have to register yourself and then apply it in the October. Fees will be like that, 750 for the female SC and ST PW candidate, and all candidates. For other call candidates, it will be 1500 rupees. There will be no age limit. This is very important. There will be no age limit, no restrictions on the number of attempts. This is very important. See, this is what the GATE means, the institution organizing the GATE examination. What they feel is that if they will just put any number of attempts or age limits, then maybe a candidate of engineering background is having skills or having a very meritorious and motivated. Maybe due to some reason not crack the GATE. Due to some reason, maybe he or she will be crack the GATE in the next year. That is why they have put no age limit and no restriction on the number of attempts. Yes, before appearing for the examination, you must aware how the question paper is organized. It's very, very important to understand. Yes, general aptitude is very important, and technical plus mathematics is again a very important part. There you have to concentrate. At the end of this session, I will discuss about how to prepare and means what should be our idea. So general aptitude, there will be a 1 to 5 questions. From serial number 1 to 5, there will be 5 questions. The number will be awarded for that. For the correct answer is same 1, that is equals to 5. From 6 to 10, the questions per the marks per question will be 2, and the total marks will be 10. For a technical plus the mathematics, there will be a question from 1 to 25. There will be 25 questions, having 1 marks for each question, a total 25 marks. From 26 to 55, there will be 30 questions. That will be each questions carry 2 marks per question, and total marks will be 60. So this is how the paper, any paper of any stream will be organized like that. The technical will be maybe a mechanical, electrical, electronics, anything. So you have to prepare yourself. Okay. Total questions will be 65, marks will be 100, and duration will be 3 hours. So technical section will be of 70 marks. See, if you are having total marks 100, and 70% of the marks will be from the technical section. So you have to give a weightage during the preparation to the technical section also. General aptitude will be around 15 marks, and mathematics around 15 marks. So then look, mathematics is must. When you do your MTech program, and after that you will appear for the PhD degree in the IITs, they will definitely work. They will definitely find they will definitely explore that the candidate who is applied for the PhD program, the general aptitude, fundamentals, and the mathematics. They are not bothering much about the technical knowledge. So that is why it is included in the GATE entrance examination. Also, the 30% weightage is given to that. So you should be
It should give an weightage to this section also, so that you can score a very good score, overall score of the GATE. 25 marks to 40 marks will be allotted to numerical type questions. It is not a multiple objective, multiple options question. It will be a numerical type. You have to write answer after calculating the solving the numerical. This is very important. They want to see your skills. Okay, that is very important. In our time, there was 75 marks for the objectives and 75 marks for the subjective, and we have to write in the question booklet. But now the scenario has changed because the number of applications are very large. They cannot, these 8 institutes cannot evaluate each and every sheet. So that is why they go for the home sheet. Okay. See, now it is very important to understand the pattern, GATE examination pattern. The GATE examination consists of multiple choice and numerical answer type questions. MCQ, that is multiple choice questions. Yes, these questions, the questions are objective in nature, and each question will have a choice of 4 answers, out of which a candidate has to mark the correct answer. Each question carries maybe 1 or 2. It depends upon in which section it is appearing. Numerical answer question is very important. There will be no choice available for these questions. A numerical answer questions carries 1 or 2 marks in all sections. The answer for this question, the real number to be entered by using mouse and a virtual keyboard displayed on the monitor. No negative marking for this question. This is very important. They will see what is your answer. You can enter this your answer by using a mouse and virtual keyboard displayed on the monitor. But there will be no negative marking for these questions. Okay. Anyway, so this is how this is how the marks are awarded. For the MCQs, 1 mark. For the negative marking is also there. That is for if question is right, then you'll get a 1 mark. But if question is okay, sorry. And if the question is correct, then you'll get a 1 mark. If question is wrong, your 0.50 number will be deducted from your overall score. For 2 marks question, if your answer is correct, then you'll get a 2 marks. But if it is wrong, then it will be your marks will be deducted. That is 0.66. Yes, for the numerical answer questions, 1 mark and 2 marks, there will be no negative marking. So see, you have to organize your study like that, or your planning in that way, that where you have to stress. Look, for the numerical answer questions, you will having no negative marking. I think it is a point where you can concentrate so that your skills can be judged appropriately. So this is the whole idea about this. Now, okay, anyone from the audience side, this is audible and means everything is okay? Yeah. Yes, sir. Okay, okay. See, preparation of GATE examination, why I'm stressing on all this thing, it matters. It really matters how you're preparing for the GATE examination. It really matters. And see, the knowledge, what you are having, you cannot prepare for the whole 4 years. But what they want to just see, I'll show some questions here. Like design of the question, how they will design their questions. These are the categories. And you see, in all examinations, see old papers, you will find such type of questions. So the question in the paper may be designed to test the following abilities. Recall. You have to recall means what you are having in your mind. These are based on fact, principles, formula, or law in the discipline of the paper. The candidate is expected to be able to obtain the answer either from his or her memory
of the subject or at the most from one line computation. See, this is very important. There will be such questions in that. Maybe it will be having a 1 marks, but they are available. Like there is one example. See, the power factor at the resonance in RLC parallel circuit is what? Parallel circuit or series circuit? What will be the resonance? The power factor will be what? Very simple answer is that unity power factor. Okay, because in that case the voltage and current in the same phase. This sort of recall ability they want from your side. They want to see. Now it's very difficult to judge from the multiple objective questions, but still they will see, they will judge, they will put such question. You can judge your ability in this particular area. Okay. Now, yeah, this is the second part, comprehension. This question will test the candidate's understanding of the basic of his her field by requiring him or her to draw a simple conclusions from the fundamental ideas. This is very important. They will ask question like the DC motor requires a starter in order to. So this is very important to know why you require these starters in the DC motors. So develop a starting torque. I think so. No. A compensate for the auxiliary field ampere turns. Look, and third one, limit the armature current at the starting and provide the regenerative braking. See, from here, a person, a candidate must do the means he or she must act smartly. Option number B and D will not be the answer because nothing to do with the starting. Compensate for the auxiliary field impedance? No, definitely it is not there. Provide the regenerative braking? Nothing to do with this. Now, option number A and C, this is the probable answer. Develop a starting torque because starter is there. We are saying starter is required for what? In DC motor. To develop a starting torque, yes, it is possible. Limit the armature current at the starting. This is again a possibility. So, how to answer such questions? This required your understanding about the DC machine. Yes, it is required to limit the armature current at the starting, not to develop the starting torque. This is not the idea. Starting torque is not means it is not the specific objective of the starter. Starter is used because you required to limit the armature current. Now, here I will give a fundamental. What is the fundamental understanding of the DC electrical machine? See, what is current? Simple. What is current? Current is nothing but is a voltage upon resistance. Okay, P upon R. That is simple Ohm's law. That is current. When we talk about the DC motor, what will happen? That voltage will be what? V means applied voltage minus EB. EB means what? Back EMF. The difference of this voltage is again EMF applied voltage. V minus EB upon R. RA means what? Resistance of the armature. See, at the starting, what is happening when you are starting the DC motor? Your speed is 0. And the back EMF is nothing but equals to P, phi, and Z upon 68. P is constant, phi is again a constant, and Z upon Z is constant, E constant, 60 is constant. So here you see that it is proportional to what? Speed. आपका सब कुछ constant है, but speed is proportional to speed. अब यहाँ पे जब आपकी speed ही 0 है, तो back EMF भी 0 होगा आपका here. अब क्या होगा जब आपका बैक ईएमएफ 0 है यहाँ पे, तो V माइनस 0 अपॉन RA, और जो आपका RA है वो क्या है? वो 0.1, 0.2 या 0.5, मैक्सिमम 1 है. तो 230 वोल्ट आप अप्लाई कर रहे हो और 1 ओम आपका रेजिस्टेंस है, तो करंट एट द स्टार्टिंग विल बी व्हाट? 230 माइनस 0 अपॉन 1, that is equals to 230 amperes. See, a very large current will flow through the armature. अब it will damage the machine. To limit the armature current, we require a starter. Starter कुछ नहीं करता बेटा. Starter क्या करता है? आपको स्टार्टिंग में या तो कुछ रेजिस्टेंस इंक्लूड कर देगा आर्मेचर में, so that your resistance, your current will be limited, और there will be, मतलब वही करेगा. फिर number of starters are there. DOL
डायरेक्ट ऑनलाइन, इसमें कोई, ये 5 किलोवाट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नॉलेज है, ये आपको हीट में काम आएगा। 5 किलोवाट से नीचे की मशीन्स के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ स्टार्टर, बट यू रिक्वायर DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कोई सिर्फ प्रोटेक्शन आर अवेलेबल, क्या होता है, नो वोल्ट रिलीज होता है या ओवर करंट रिलीज होता है, बस, और कुछ नहीं होता, बट वो कुछ लिमिट नहीं करता। बट और स्टार्टर्स भी है 3.4 पॉइंट। इन एवरी स्टार्टर हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आर्मेचर में स्टार्टिंग पर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर रहे हैं। जैसी मशीन आपकी स्पीड अप हो जाएगी तो वहां पे बैक ईएमएफ आ जाएगा, बैक ईएमएफ आ जाएगा, देयर विल बी अ काउंटर ईएमएफ टू द सप्लाई वोल्टेज, तो V माइनस EB हो जाएगा, और जो V माइनस EB एंड दैट वोल्टेज विल बी रिड्यूस्ड सच दैट द करंट विल बी रिड्यूस्ड। तो ये लॉजिक है आपका, और ये फंडामेंटल्स है, ये अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझना है इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे, ये बेसिक है मशीन्स का। हाँ, again it's an application part. This is how they will design. This is the 3 point: recall, comprehension, and application. In the application part, what is happening, they want to know, the candidate is expected to apply his knowledge either through the computation or by logical reasoning. Very small answer is, a question is there. I know that nowadays it is this answer is changed, but anyway, the following motor is preferred for locomotive motor drive. ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के इंक्लूड किया है इसमें, मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहता हूँ जो आजकल ट्रेंड है। तो दिस इज हाउ वी विल गो अहेड। द फॉलोइंग मोटर इज प्रेफर्ड फॉर द लोकोमोटिव मोटर ड्राइव। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर DC सीरीज मोटर हो सकता है, बट इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। बट अब यदि आपको आंसर करना है, अभी गेट में क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करोगे, तो विल गो विद DC सीरीज मोटर। रीजन सिंपल सा है लोकोमोटिव्स के लिए, बिकॉज लोकोमोटिव्स मोटर ड्राइव इट इज रिटन एक्सप्लिसिटली। तो लोकोमोटिव्स में व्हाट इज हैपनिंग, यू रिक्वायर्ड अ वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क, एंड DC सीरीज मोटर हैविंग एन एबिलिटी टू ड्राइव अ वेरी having a very high starting torque. तो ये मशीन हम यूज करते हैं क्योंकि जब आपकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो रहती है, हैविंग ए वेरी हाई टॉर्क, दिस इज रिक्वायर्ड। आपने ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, आप लोग लोकोमोटिव्स में सफर तो करते ही, यू ट्रेवल इन द ट्रेन्स आल्सो। तो आई डोंट नो कि इसमें से कितने पार्टिसिपेंट दे हैव ट्रेवल्ड इन लाइक मेट्रोज और लोकल ट्रेन्स, और कितने लोगों ने अपनी जो पैसेंजर ट्रेन उस पर ट्रैवल किया होगा। सी, इट इज रिक्वायर्ड वेरी हाई, अदरवाइज इट विल, हाउ इट विल स्टार्ट। तो DC सीरीज मोटर जो है वो अब रिप्लेस होने लगी है इंडक्शन मोटर से, बट स्टिल मेट्रोज में या आपके लोकल ट्रेन में DC सीरीज मोटर ही यूज करते हैं। यदि कोई लोकल ट्रेन में या मेट्रोज में बैठा है तो यू सी आपकी जो मेट्रो है या लोको है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, उसका इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क वेरी हाई, बट आप पैसेंजर ट्रेन में बैठे होते हो तो स्टार्ट वेरी स्लोली एंड स्पीड अप द इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो ये एक लॉजिक है जो आपको डेवलप करना। हाँ, बट इसका आंसर सी है, DC सीरीज मोटर ये बेसिक को चेक कर रहा है आपके। बट nowadays we are replacing DC series motor with induction motor because we have specialized control in the induction motor. There you can produce a very high starting torque at the time of starting using VYF method. तो ये लॉजिक्स हैं जो अपने को डेवलप करने होते हैं, और ये स्किल्स जो है आपकी, मैं मानता हूँ आई कैन आल्सो अंडरस्टैंड दैट बीटेक लेवल पे इतना अंडरस्टैंडिंग आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको नीचे एवरी सेमेस्टर आपको 4-5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और यू कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। बट स्टिल आपको अपनी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द engineering side also. So the question based on the above logics may be a mix of a single standalone statement, phrases, data type questions, combination of option codes type questions, or match items with the questions. So this is the whole idea. So my idea is that कि आपको इस पे ही कंसंट्रेट करना है when once you are reading anything. अब आप समझ लीजिए आप पढ़ रहे हैं DC मोटर, आप DC मशीन ही पढ़ रहे हैं, तो बिफोर स्टार्टिंग द DC मोटर you have to define that मेरे को इसमें क्या क्या पढ़ना है, what you have to go through it and what should be the outcome. दोनों चीज यदि आपने डिफाइन कर ली, then you see ये तीनों के आंसर आपको मिल जाएंगे।
आपकी रिकॉलिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी कंप्रेंशन एबिलिटी बढ़ जाएगी, यहाँ आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, प्लस यू कैन अप्लाई these idea for the real time application also. This is the logic, and that is why the gate is organized. This is my idea, this is my idea, this is how I am thinking about the gate and why how they are. मैंने बहुत पेपर देखे अभी आप लोग के मतलब इस लेक्चर आने से पहले, तो दिस इज हाउ आई फील अबाउट दिस. This is a fourth part where you just analysis and synthesis. In each question, the candidate is presented with data, diagram, images that requires analysis before a question can be answered. This may be a mathematical question that is also a part of that, or general aptitude. Question in this category could be, for example, involved candidate in recognizing unstated assumptions and separating useful information from the relevant information. This is very important. See, this statement is very important. There, something is hidden inside the statement, and you have to separate, because there will be an unstated assumptions inside that, and then you have to recognize and you have to identify. So, all of you got the point? Yes. Anyone? You have an means right to unmute their self. कोई participant unmute करिए अपने आप को and interact with me. Anyone? आपके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है. चैट बॉक्स पे आप कुछ लिख सकते हैं. मैं पढ़ पा रहा हूँ चैट बॉक्स पे. यस 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 सर, यस सर, इट्स ओके. बट व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब आई वांट टू लिसन फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम द पार्टिसिपेंट साइड, कि मींस व्हाट यू थिंक अबाउट द गेट नाउ. अब आपको क्या लगता है, यदि आप अनम्यूट कर पा रहे हैं, या कोई क्वेश्चन यदि आपके इफ यू राइट यू हैव अ क्वेश्चन राइट नाउ, यू कैन आंसर. ओके, अब उसके बाद अपन जब विल डिस्कस अबाउट द टेक्निकल पार्ट. I think we don't have it. Radharaman, are you there? Yes, sir. Yes. Okay, Ashwini, Yes. you are. Yes. Ashwini, you are a participant or you are from the organizing team? Yes, I am organizing team. Ashwini, actually, I want to interact with the participant. Means a bit Okay, participant. sir. Can you unmute some participant who is Yes, available? sir. Sure, sir. Sure, sir. Yes, yes. I want to know about their view. Hello? Yes. Yeah. Tejaswini, you are a participant? Yes, sir. Okay. Tejaswini, you are in which year? Final year, sir. That's very good. You are doing electrical engineering. Yeah, yes, sir. That's very good. So you are from Nagpur or somewhere else? Sir, I'm from some small village from Chandrapur district. That's good. That's really good. Chandrapur district. Okay. One of my PhD candidates from Chandrapur. He was a faculty in the Chandrapur some college. Yeah, he from I can recognize. So Tejaswini, now you tell me, what do you think about gate? मतलब अब वो gate के बारे में कुछ समझ में आता है जो जितना मैंने presentation अभी आपको दिया है? You tell me about the gate. Yes, sir. Means yeah, they give the like some knowledge. Sometimes apply your means on some company industry. You can you achieve knowledge for the 4 year. Okay. 4 years. How can apply on the solution of the problem? Why you apply for the gate examination? मुझे आपका आइडिया जानना है. आप क्यों gate examination के लिए अपेयर होना चाहती हैं? Sir, I want means crack the like means industry like apply for the bail company. Okay. Means you want to join a PSU. Yeah, yes, sir. Like other participant also wants to join that PSU or do the MTech. Anyway, this is a good and all the best for your objectives. Yes, sir. My gate study this also helps me for the main new concept clear and doubt about the question.
Okay. All of you, all participant at the end of the presentation, I'll give 15 minutes to interact with me, so that you can ask anything from the electrical engineering or machine side, so that we can just interact. I don't know, मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितना मैं बता पाऊंगा या आपके क्वेश्चन को आंसर कर पाऊंगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अपन डिस्कस कर सकते हैं। और जो मेरा 15, 16, 20 इयर्स का जो मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो शायद आपके लिए काम आए। एनीवे, ओके, विल गो अहेड with our Sir, presentation. I have a question, sir. Yeah. Sir, how can we share most of the topic have the means what is which means topic I cover for the GATE exam, because sir now time not means most available for the preparation for the GATE. Only 2 months of left. How can prepare sir, for the electrical machine? I'll let you know. I'll let you know at the end of the presentation. I'll let you know what to prepare and how to prepare. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Most welcome. Uh, Yeah, tell me. Sir, just sir, may I add some few words in the student interaction? Okay. Tell me, Rajaram. Sir, till now, so all the students, please remember, just now, sir has given you the strategy, like how the GATE question paper is prepared, Yes. right? Most of you might have come across this thing that kya padhe hum, right? What to learn, because many of you think that questions बहुत hard पूछे जाएंगे and all those things, but sir has very explicitly given the strategy how the question paper of the GATE is being prepared, right? So this is very important, and as sir has rightly said to all of you that sir will be interacting with you in the last 15 minutes. So whatever you have in your mind related to this, you can ask to our expert. He will be answering as much as questions as he can, as he have already said. So sir, over to you. Yeah, thank you, Radhavan. Thank you for just adding for this. और यही मेरा लॉजिक है। मैं बताना चाहता हूँ, गेट के पहले बिल्कुल क्वेश्चंस जो होते हैं गेट के बहुत आसान होते हैं। अभी जब मैं 4-5 क्वेश्चन को मैं आपको एग्जांपल दूंगा, वो देखिए आप, यू कैन सॉल्व। बस अपने साथ में क्या है, हम उसके साथ में सिर्फ ये इशू हो जाता है, हमने उसको बना रखा है कि दिस इज ऑल वेरी वेरी टिपिकल। नो, गेट इज वेरी वेरी, ओनली दिस 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन द गेट एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो विल गो अहेड इन द प्रेजेंटेशन पार्ट। Okay, so these are some strategies that you have to adopt. अभी जो अपन बात कर रहे थे, या अभी मुझसे किसी स्टूडेंट ने भी बात करी कि हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, क्या होंगी। So if you are a fresher and preparing for the first time, then these are the some approaches that you should adopt. Like you have to define your aim. अभी से मुझे किसी ने बोला सर 2 महीने बचे हैं, अपने को क्या करना चाहिए। I think we should avoid such type of हमें ये, हमारे दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि वी शुड अवॉइड कि भी अब 2 महीने बचे, अब अपन कुछ तो, ऐसा इट शुड नॉट बी। योर एम शुड बी डिफाइंड। यस, आई हैव टू क्लियर द गेट इन एनी केस। व्हेन आई हैव अपीयर्ड फॉर द गेट, आई हैव स्टार्टेड माय मींस स्टडी। I was in the job in Mumbai. I came back on the month of August or September because I don't want to continue with this technical work, not technical work, with the industrial work. So I came back on August in the month of there was a Rakhi in that case, and started preparing for the GATE in September. And September, October, November, December, January, 5 months there, but I started seriously from the month of November. But there was a clear-cut idea in my mind that I have to go for the GATE. And it does. I cracked the GATE. There was that time there was a ranking. 498 was my rank, and appeared and just got the admission in UR, University of Merit. But due to some reason, I just opted for the Merit. But that time I was very much clear that why I am appearing for the GATE. That should be an idea. So you should examine closely the examination pattern, syllabus and level of difficulty. ये वाला point मैंने आपको अभी इसलिए include किया है क्योंकि now you are preparing. This is the November, December, January, and 2 months are more than enough to just brush up your all knowledge. ये आपको करने के लिए बहुत है, ये मुझे ऐसा लगता है।
तो ये पहला वाला पॉइंट जो है वो मैंने इसलिए आपको जस्ट हैव शोन टू यू. द फर्स्ट स्टेप फॉर द इट शुड बी दैट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. आपको तो ये करना ही है क्योंकि दैट विल बी डिफाइंड योर स्ट्रेटेजी. आपने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो आपने प्लान कर रखी है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब आप लोग क्या करते हैं, आपको कोई चीज खरीदनी है, आपको मोबाइल खरीदना है, यू वांट टू परचेज ए मोबाइल, आप क्या करते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो क्या कौन सा मोबाइल खरीदूं. आप क्या करते हो, आप फीडबैक लेते हो, आप उसमें एनालिसिस करते हो, उसमें ये क्या निकल के आता है कि हाँ ये मोबाइल अच्छा है, वो मोबाइल अच्छा है. सेम थिंग, आपने गेट के लिए प्रिपेयर स्टार्टेड फॉर द प्रिपेयरिंग द गेट. So you have to see the previous year question paper. You have to collect the data. You have to get the feedback from their question papers कि भाई कैसे questions आते हैं. And it will definitely help for the execution of your plan because you have planned already. Now you have to execute your plan. One key best reference book for each subject. This is very, very important. Don't go for multiple books. You see the books. आप सिर्फ जो बुक्स हैं वो सिर्फ आप देखिए कि एक ही कोई रेफरेंस बुक होनी चाहिए आपकी. एंड you are advised to read, you're not advised to read too many books for each subject. Practically it is not possible in limit time frame. कोई भी बुक ले लीजिए और डोंट बॉदर कि वो इस राइटर की है या इसकी है उसकी. आपको जो समझ में आती है, what you can understand easily, you read that book. Take my word again, I'm saying whatever where you are feel comfortable in reading the books or going through the books, consider that book only. Doesn't matter कि आप मशीन्स के लिए भीमरा यूज कर रहे हो, आप थरेजा भी यूज कर सकते हो, आप नागराज कोठारी भी यूज कर सकते हो. That is not an issue. Only thing is that कि वो आपको समझ में आना चाहिए. You can understand the logic, the statements given in the book clearly. That's the idea. Okay. Okay, this is tip number 1. This is tip number means what I think for you guys. Preparing for the need times and strategic planning with implementation. But even before that, first introspect yourself of what you are weak and what you are strong at. ये दो पॉइंट पे तो आपको करना पड़ेगा भाई. दिस सी power system, I am very comfortable, machines I am not comfortable. That you have to identify. It is always advised to the first finish up the part that you interest your section. आपको जो आता है, अब there is a two strategy. एक कैंडिडेट करेगा जो मुझे आता है वो मैं आखिरी में पढ़ूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं पहले पढ़ूंगा. But this is my advice to all of you. You finish up the part that you interest you and sections you are strong in. This will help to build the confidence and assures your increase in the score. The last line is very important to understand because your confidence is required in the examination. Your knowledge is okay. This is secondary, but the confidence is the primary thing which is required in the gate. Yes, this is the second step is to take up the sections you are weak at. The focus must be on clearing the basic to advanced concept first followed by the practicing the questions until you attain the accuracy. आपको 4 चाहिए, 1 + 1 + 1 + 1 = 4. अब जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में एक आइडिया है 2 + 2 भी तो 4 होता है. तो this should be required from your side, and this skills going to be judged in the gate examination. What my point? Now another thing is that if your fundamentals are very strong, yes, you fear for the topic will get away. Schedule more time, more hours. If you do not feel confident about a particular chapter or a topic or a section, because you cannot skip any section if you want to get a good rank. This is very important. आप ये नहीं कर सकते कि ये सेक्शन छोड़ दो, ये बहुत टिपिकल दिख रहा है, मैं आगे चला जाता हूँ. नहीं, क्योंकि गेट में जो सीक्वेंस बना हुआ है, रिकॉल, कंप्रेhension एंड एप्लीकेशन पार्ट, एनालिसिस, सिंथेसिस, this should be always be there in your gate examination. If you skip something, definitely will not get a good score because the link will be break. Okay, so tip number 3, keep looking and solving previous year question papers to have a fair at what level and type of questions to expect in a gate examination. Yes, आपको एक लेवल, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं. The questions may be tested in the form of recall, ये अपन बात कर चुके हैं, comprehension, application, analysis and synthesis, common data and based questions, linked answer,
Question memorize formula, shortcut on your tips, and make note of every chapter of a topic. This will help a lot in the last weeks of the examination. आपको ये याद कर बनाना है कि आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होना चाहिए. जब आप फरवरी में when you are revising everything, आपको बुक रिवाइज नहीं करनी है. Then you have to the self made notes जो हैं वो shortcuts जो होंगे that you have to prepare. You have to go through it for the preparation. Yes, detail. Now this is again an idea in which you will see detailed syllabus and the multiple study resources must be with you to not to skip even a single topic. Many books have a previous year's question book papers along with the sample paper. Browse through them and solve when you feel 80% of your preparation is done. इसको आप बिल्कुल ऐसा मत करना कि 50% या 60% आपने कर लिया. आपका कॉन्फिडेंस, you lose your confidence. What I say that 80 or above that, if you're prepared, you think कि मैंने कर लिया है जो syllabus mentioned है आपके curriculum में, then you appear for that. Assess the mock test results to analyze your weak and strong areas and accordingly work on them. This is the whole idea strategy according to that. This is step number 5 that I think it is very important to maintain a study routine and disciplined efforts along with having gaps in between for leisure time and other entertainment. A healthy body and a sound mind will let you stay focused. So apart from study, you have to maintain your lifestyle also. Now अब आज से ही आप क्या करिए, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लीजिए. मैं ये नहीं बोलता कि आप सुबह जल्दी उठिए, आप सुबह 9 बजे ही उठिए if you have nothing to do, but schedule your whole day. 9 o'clock पे उठिए, fresh होइए, then you go for the breakfast, then you go for your studies. Meanwhile, in the afternoon, just get ready, get your lunch finished fast. Then again you go for the studies. In the evening time, just meet your friend. क्योंकि वो क्यों मिलना है अपने फ्रेंड से वो भी अपन बताएंगे आपको. Meet your friend in the evening time. Just have a मतलब आप just you see any news channel, English news channel or Hindi news channel to update yourself. Then you go for dinner and again study. I think if this is my idea, you can change your routine also accordingly. Yes. Make a revision plan. This is very important. Make a habit of reading and revising simultaneously. आपको दोनों चीज साथ साथ करनी होगी. आप भी सोचो कि मैं अभी ये कर लूँ रिवाइज बाद में कर लूँगा, तो उतना टाइम नहीं मिले अपने को. एंड द सिनेरियो इज वेरी वर्स्ट नाउअडेज. दोनों साथ में करना चाहिए. मैंने जानबूझ के जोड़ा है क्योंकि अब अपन नहीं कह सकते कि मैं फरवरी में रिवाइज कर लूँ, कुछ भी हो सकता है. तो इसलिए वी शुड read and revise simultaneously. While studying a particular subject, devote 80% of a self-study time in developing the concept of new subject and rest 20 to 30% time in rigorously devote for revision of already completed topic subjects. Towards months closer to exam, increase the revision time for the proper retention of concept till exam day. While revising, make sure you do following: review the class notes, revise, underline, highlight portion of the textbook, then attempt only marked questions once more. If your time permits, then start with new set of questions. This is macro notes I am talking about. You should have your macro notes. Whatever your studies, there should be a one notebook. There you write in a short that this you have to remember. You should go through it before the examination. This is very important. Now, flow like a river. I have given this name because of a certain reason. So, when you are meeting with your friends and discussing something with your friend, it should be discussion oriented. Because when you are discussing with the friend and the seniors for clearing your doubts, this you do daily on a routine basis, because you should not allow to accumulate the doubts which may result in the mental stress. Also interact with your successful seniors and fellow mates who know about their path of success strategy. मैंने इसको नाम flow like a river इसलिए किया हुआ है because it is anonymous with a river water which when flow gets self purified. आप doubt clear करते चले जाएंगे तो वो purify होता चला जाएगा and that will be help you out.
तो डेली जो मैं आपको बोल रहा हूँ, एक टाइम बना लीजिए कि यू हैव टू डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। एक ग्रुप बनाइए आप लोग, वो ग्रुप शाम को सुबह जब भी आपको टाइम मिले, एज पर योर कन्वीनियंस, यू डिस्कस अबाउट योर व्हाट यू हैव डन लास्ट। ये मत करिए कि होता है कि हमने ये पढ़ लिया छुपाने, हमें ये नहीं करना। हमने ये किया है, उसने क्या किया है, उसके बारे में हमें वी हैव टू डिस्कस एंड वी हैव टू क्लैरिफाई योर डाउट्स। कोई डाउट्स तो होंगे आपके पास, आज हमारे पास भी होते हैं तो आपके पास भी होंगे। So this is all about the preparation tips that I want to give you, all of you. This is a very important question. Is coaching is necessary? Yes, coaching is necessary. I think the answer is very some will say yes, some will say no. But I think coaching gives a proper direction towards the preparation. This is another side of the coin. If you want to join a coaching, join third year even semester. This is my feeling. Since most of the GATE syllabus is covered in the academic. आपने सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लिया पर आपने पास सिस्टम पढ़ा ही नहीं, आपने ये पढ़ा ही नहीं और वो स्टार्ट कर दिया, then it will be difficult. Once you have finished your third year and you are in the even semester, then what will happen? There will be then your course will be covered and you can revise what you have covered in the college or institution. There are so many students who got a good result without coaching by following the proper plan. तो ये भी है। तो आप ये आप खुद डिसाइड करिए कि by analyzing yourself कि आप कितने अच्छे से कर पाते हैं. If you don't have a good basic in subject, you should join a coaching, otherwise no need. तो ये this is up to you. आपको करना है नहीं करना है, you decide by yourself. Okay? Sorry. The role of test series. Okay, what are the role of test series? Familiarize yourself with the final exam environment. Yes, it is required. Help in the time management, very much required. Increase self-confidence, this is the must. The amount of mistakes that can be reduced, yes, it is required for that purpose. Helps you to get instant result and analysis. Yes, for this purpose, you appear for a test series. One reason also to join the coaching is that they are having a number of test series, so you can appear also test series for that, so that this will be there. Okay, now you appeared and got a very good score. I hope that all of you will get a very good score. What next? Yes, you will get MTech admissions based on your GATE score, maybe in IIT, NIT and ISCs. In IIT and ISC, they will conduct their own selection procedure, but in the NIT, there will be a central counseling committee through the CCMT counseling. You will get admission in that. Options for pursuing PhD program in engineering after completing the ME and MTech. This is also required for the entrance through the GATE. Job opportunities, yes, through campus placement. All NITs, IITs, and good institutions have a campus placement. There you can get a good campus placement, and if you reveal that you have a good score, it will be good for you. Firms like Google, Samsung, because Google and Samsung are coming in our institution, so they always prefer students having appeared in the GATE examination. In the private sector, many private firms are now inclined towards recruiting talented engineering post-graduated in their R&D and other department because of the competitions. In fact, companies have been giving a preference to the GATE aspirants over a BTech and BA students. So these are the role after the GATE. In the foreign firms, so many students are getting a good opportunity in abroad because of their GATE scores. Teaching job, you'll get a good teaching job. In the public sectors, you'll get a direct interview call, and like BHEL, ISC, NTPC, BPCL, BAC, HPCL, and the pay package in these jobs are all no less than the packages offered by the top private companies. So these are the opportunities. If you get a good score, good rank in the GATE, then definitely these are the openings for you guys. Okay. So now we'll start a technical part here. So we will. I'll let you know something. Then I'll have some questions, and I'll not give the solutions.
बट आई विल गिव, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, मैंने राइटिंग पैड रखा है मेरे पास, इफ यू आस्क आई कैन एक्सप्लेन आल्सो, बट मैं द आइडिया इज दैट कि हाउ इजी क्वेश्चंस आर देयर. So if we talk about electrical machines, it is basically divided into two parts. One is static part of the electrical machine, another is rotating part. Static means transformer. Transformer is a very important part, and rotating is comprising of DC machines, asynchronous machine and synchronous machine. So look, transformer works on electromagnetic induction and Faraday's law. These are all fundamentals. I'm not going to teach over here, but these are the fundamentals. You should be very clear about it. What you can prepare in a transformer, वो अपने को बात करनी है हम ट्रांसफार्मर में क्या प्रिपेयर कर सकते हैं. देखिए, ट्रांसफार्मर स्टार्ट आप करिए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, स्पेसिफिक डेफिनेशन क्या है, इट चेंजेस द वोल्टेज लेवल फ्रॉम वन टू अनदर विदाउट चेंजिंग द इट्स फ्रीक्वेंसी एंड इट्स स्टैटिक डिवाइस. अब ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, एंड यू हैव टू एनालिसिस. आपको यू शुड अंडरस्टैंड द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर एट डिफरेंट लोडिंग कंडीशन. देखिए, ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं है, लोड तो उस पर आप कनेक्ट करेंगे उसके सेकेंडरी में, और प्राइमरी में आप सोर्स कनेक्ट करेंगे. प्राइमरी में भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग, सेकेंडरी में भी हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग, डिपेंडिंग अपॉन दैट. आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ट्रांसफार्मर की, दैट इज डिपेंड्स अपॉन you and your application, step up or step down. You should understand the equivalent circuit, because without going to the equivalent circuit we cannot judge the performance of a transformer. तो हमें इसका फेजर डायग्राम समझ में आना चाहिए. We should understand the equivalent circuit of a transformer, क्योंकि उसी से हम उसके परफॉर्मेंस को जज कर पाएंगे. Look, transformer is not transferring the power conductively, वो इंडक्टिवली आपको कर रहा है कि आइसोलेशन प्रोवाइड कर रहा है. दो वाइंडिंग जिसके बीच में एयर गैप है या एक रोल इलेक्ट्रॉन पाथ का मैग्नेटिक कोर है, तो उसमें कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है. तो उस केस में हम उसको कैसे परफॉर्मर को जज कर पाएंगे, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर. ये आपको आना चाहिए. ट्रांसफार्मर में दो इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो गेट में आ सकते हैं, जो पूछे जा सकते हैं, ओसी एंड एससी टेस्ट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट. ये काय के लिए करते हैं, to get the information for your equivalent circuit parameters. उसी के लिए हम यूज करते हैं OC and SC टेस्ट. ओके, ये आपको आना चाहिए. ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर में ये भी आपको आना चाहिए, ये आपको प्रिपेयर करना चाहिए ट्रांसफार्मर में कि पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है. तो दिस इज एन एफिशिएंसी कैलकुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर. इसमें एक टर्म और है, पावर एफिशिएंसी एंड ऑयल एफिशिएंसी. ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसफार्मर जो आपको पढ़ना चाहिए आपके समय में. नाउ वी कम टू द रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स. रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स in which there will be a rotating part and a stationary part. तो दो पार्ट होंगे, स्टेटर, रोटर and separated by the air gap. So there is categorized like DC machines, asynchronous machine and synchronous machine. DC machine is a machine. It's a doubly excited machine. First of all, keep in your mind. DC machine जो है वो डबली एक्साइटेड डीसी मशीन है, क्योंकि डबली एक्साइटेड का कैरेक्टरिस्टिक पूरी डिफरेंट होती है. आपको दो सप्लाई किया, डीसी मोटर की बात करिए तो यू रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए फ्लक्स. लुक, अब हम रोटेटिंग मशीन मोटर की बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको देना चाहता हूँ. यहाँ पे दो पार्ट है इसके अंदर. यदि हम जनरेटर की बात करेंगे, टॉक अबाउट जनरेटर, व्हाट विल हैपन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस्ड ईएमएफ. अब फ्लक्स कहाँ से आएगा, या तो मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो. इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी नीड ए सप्लाई. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल इंड्यूस्ड ईएमएफ. ये जनरेशन का पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट है मोटरिंग. व्हाट इज ये सभी के लिए कॉमन फीचर है, चाहे कोई भी मशीन. सेकंड वाला पार्ट है ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क. दिस इज फॉर द मोटरिंग. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का के लिए, मोटरिंग के लिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का के लिए, जनरेशन के लिए ये पता होना चाहिए आपको, है ना. और वो सब फिंगर्स क्या शो कर रहे हैं पता होना चाहिए आपको. तो व्हाई आई एम सेइंग कि डबल एक्साइटेड मशीन क्यों डीसी मशीन, एक करंट कैरिंग कंडक्टर. करंट मतलब कहीं से करंट आ रहा है, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. फील्ड हमें कहाँ चाहिए, वो भी आपको किसी सप्लाई से मिल रही है. दैट इज व्हाई इट इज अ डबली एक्साइटेड मशीन. सिंक्रोनस मशीन एंड डीसी मशीन, इट्स अ डबली एक्साइटेड डीसी मशीन्स. whereas the asynchronous इंडक्शन मशीन जिसको हम बोलते हैं, वो होती है आपकी इंडक्शन मशीन जो होती है वो आपकी वो सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन जस्ट लाइक ए ट्रांसफार्मर. उस केसेस का प्रिंसिपल, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. तो ये दो प्रिंसिपल है हमारे पास.
तो डीसी मशीन्स में आपको क्या पढ़ना है बेसिकली, आपको यू शुड अंडरस्टैंड इट्स बेसिक आइडिया, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसका कंट्रोल। लुक, फॉर एवरी ड्राइव, फॉर एवरी मशीन यू हैव टू कंट्रोल इट्स स्पीड। हम डीसी मशीन में क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, आइदर बाय चेंजिंग द आर्मेचर पैरामीटर और द फील्ड पैरामीटर, शंट है या सीरीज मशीन है, वो सब क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए। आपको इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेशंस आना चाहिए, पावर फ्लो आपको उसका आना चाहिए, आपको इसका परफॉर्मेंस कैलकुलेशन आना चाहिए बस, और इसका स्पीड कंट्रोल आपको आना चाहिए। ये डीसी मशीन, कोई भी मशीन के लिए आपका ये परफॉर्मेंस आपको आना चाहिए, तीनों मशीन के लिए यही कैलकुलेशंस है। डीसी मशीन्स में आप ऑक्सीजन टेस्ट हो गया, ये टेस्ट हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इंडक्शन मशीन जो होती है, वो मशीन जो होती है वो इंडक्शन पे काम करती है। इसमें आपको वही अगेन प्रिंसिपल टॉक्सिव कैरेक्टरिस्टिक, हाँ डीसी मशीन में आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आना चाहिए हर मशीन की। और एंड यू हैव टू, आपका एसिंक्रोनस मशीन में, इंडक्शन मोटर में, यू हैव टू अंडरस्टैंड the logic of torque strip characteristic, torque equation, EMF equation, rotor side, stator side, ये सब आपको आना चाहिए। ट्रांसफार्मर यदि आपको अच्छे से आता है तो then can also understand an asynchronous machine also very easily। एक सर्कल डायग्राम इज आल्सो देयर, ये गेट में क्वेश्चन इसके बेस्ड आते हैं। तो ये सर्कल डायग्राम, लुक आइदर यू गो विद द इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर, जो ट्रांसफार्मर में किया उसमें भी कर सकते हैं। इसमें हम बोलते हैं नो लोड टेस्ट और ब्लॉक रोटर टेस्ट, OCSC जैसे टेस्ट होता है वो। एक तरीका तो है परफॉर्मेंस एनालिसिस ascertain करने का। another way is that you go with circle diagram to ascertain the performance of the asynchronous machine। synchronous motor, synchronous machine again मोटर जनरेटर हो सकते हैं। इसमें भी वही चीजें पढ़नी है आपको जो मैंने अभी आपको बताई कि परफॉर्मेंस एनालिसिस, फंडामेंटल्स। यहाँ पे अगेन डबल एक्साइटेड मशीन है तो यहाँ पे एक्साइटेशन का फर्क पावर फैक्टर पे क्या पड़ रहा है ये आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जनरेटर पैरेलल ऑपरेशन जनरेटर आपको आना चाहिए, ये भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी मशीन है वो कैसे काम कर रही है, किस लेवल पे काम कर रही है। ये आप इतना पढ़ लेंगे, इट्स मोर देन इनफ। दिस इज ऑल अबाउट द मशीन्स पार्ट दैट यू हैव टू कवर। मेरे हिसाब से इतना कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं अपन उसके बारे में बात करेंगे। Okay, this is a very simple question. Lecture में 12:30 के बाद फ्री हुआ। ये आपका सैंपल क्वेश्चन है। See, as a 220 volt, 10 kilowatt, 900 RPM separately excited DC motor has an armature resistance, simple RA. When motor operates at a rated speed with a rated terminal voltage, the electromagnetic torque developed by the motor is 70 Newton meter. Neglecting the rotational losses of the machine, the current drawn by the motor from 220 volt supply is what? अब ये मशीन आपके लिए ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, उसमें you have to tick. Okay, it's very simple. See, it's a separately excited DC motor. तो यहाँ पे आपके साथ में आपको ये याद रखना है, EB is nothing but proportional to what? P phi NZ upon 60A। आपको पावर के बीच में P is P ओमेगा, बस ये 2 इक्वेशन आपको चाहिए, आपका काम हो गया। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए वो 220 वोल्ट आपको अप्लाई कर रहा है, V माइनस आपका EB क्या होगा, V माइनस EB इक्वल्स टू IARA, ये मोटर की इक्वेशन हो गई। अब आप देखिए व्हाट वो क्या कह रहा है आपसे कि यू हैव टू फाइंड आउट what you have to find out, you have to what should be the current drawn by the motor from the 220 volt supply। अब करंट निकालना है, बड़ा आसान है। अब इक्वेशंस लिखिए, P इक्वल्स टू T ओमेगा करिए, एवरीथिंग इज नोन टू यू एंड यू सॉल्व। बस इतना ही सिंपल है डीसी मोटर में, कुछ भी नहीं करना। V माइनस EB इक्वल्स टू IARA, आपको IA निकालना है तो हमें उसके लिए EB निकालना होगा। EB इज P phi NZ upon 60 है, V हमें पता है, टॉर्क से हम EB निकाल लेंगे क्योंकि पावर इज नथिंग बट P। वहां से यू गेट एवरीथिंग, पावर मिल गई, पावर से आती है, पावर इज व्हाट, EB इनटू IA। तो पावर डेवलप हो रही है आर्मेचर में, EB इनटू IA है, तो EB इनटू IA है तो पावर मिल गई। पावर से आपको T दिया हुआ है, आपको ओमेगा दिया है, तो उसमें से आप IA निकाल लेंगे, एवरीथिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू मिस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये 2018 या 2019 में कभी आया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, जो मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, सिंपल क्या है, स्टार कनेक्टेड 12.5 किलोवाट 208
लाइन वोल्टेज। देखिए यदि आपको यहाँ अपन पर रीड करते हैं 3 फेज 60 हर्ट्ज squirrel cage induction motor has a falling equivalent parameter. This is neglect the shunt branch in the equivalent circuit. The starting current for this motor when connected to this line कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, पर यदि आपको यहाँ पे 200 वोल्ट भी नहीं दिया, लाइन वोल्टेज नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, आपको अज्यूम करना होगा जो आपने याद किया, आपको बताया कंपैरिजन में आपका अजम्पशन करने जो हिडन हो गया, ये आपके ऊपर है, तो आप अजम्पशन करके चलोगे यहाँ पे। अब इन द लाइन लिख दिया, दैट इज ओके, गेट, ये भी गेट का क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, स्टार्टिंग करंट क्या है, अब ये स्टार्ट करंट स्क्विरल इंडक्शन मशीन है, स्लिप 1 है यहाँ पे, स्टार्टिंग करंट का स्लिप 1 है, तो आपको जो एक्स है वो एक्स रहने वाला है, कोई चेंज नहीं होगा। यदि स्लिप होगा तो एस इंटू एक्स हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी आपकी। और करंट क्या होता है, E अपॉन जेड, जेड क्या है आपका आर प्लस। अब इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी रखी है हमने, नेगलेक्ट द शंट ब्रांच इन इक्विवेलेंट सर्किट। देखिए स्टेटर के लिए आर एल सीरीज में आएगा, प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स के लिए हमारी एक शंट ब्रांच आएगी जिसमें आर और एल वो भी पैरेलल में होंगे, वो शंट में लगे होंगे, और फिर सीरीज में आपके रोटर पैरामीटर लगेंगे आर इंटू एल। अब इस पूरे केस में आप शंट को यदि मूव करेंगे बिफोर स्टेटर तो वो सिंप्लीफाइड वो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। जब शंट को आप रिमूव ही कर दोगे तो वो आपका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट हो जाएगा। तो वो यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन को इंक्लूड किया। इतना आसान है कि सिंपल वी बाय जेड करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। लॉजिक इसमें कहाँ छुपा हुआ है जो आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पे करना है कि स्टार्टिंग करंट, क्योंकि एस आप यहाँ पे कहीं नहीं निकाल पा रहे। व्हाट इज स्लिप, स्लिप इज रोटर स्पीड। आप यही कहीं स्पीड कुछ नहीं दिया हुआ है आपको, सिर्फ करंट कम दिया हुआ है आपको और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज के अकॉर्डिंग आप सब निकालेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। दूसरा क्वेश्चन आपका ये बोलता है, फिर अपन डीसी मोटर, ये भी एक गट का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए आप, इसमें भी कुछ लॉजिक होगा जो अपने को फाइंड आउट करना होगा। ए 120 वोल्ट डीसी शंट मोटर टेक्स 2 ampere at no load. It takes 7 ampere on full load while running at 1200 rpm. The armature resistance is 0.8 ohm and the shunt resistance is 240. The no load speed is in the rpm will be. It's very simple. Shunt machine है आपकी, shunt machine में पहले आप हमें इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, from there you can find out the voltage दिया, from there you can find out the current in the field. That is simple. V by R कितना है आपका, V 120, R कितना फील्ड आर्मेचर में, सॉरी फील्ड में 240, वो पैरेलल में लगा हुआ है, 120 डिवाइड बाय 240 दैट विल बी 0.5 एम्पियर्स। 0.5 एम्पियर्स विल बी इन द फील्ड करंट। अब जो भी लोड करंट होगा आर्मेचर निकालने के लिए आपको 0.5 को माइनस करना होगा, बस उसमें ये लॉजिक लगा हुआ है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज दैट कि आपको नो लोड स्पीड निकालनी, मतलब आपको 2 एम्पियर पे फाइंड आउट करना। तो वेरी सिंपल, आप EB1 EB2 निकाल, EB1 इज व्हाट, सिंपल है, V माइनस IA इंटू R, IA1 IA2 आपको पता है, EB1 EB2 निकालिए, एंड दिस इज शंट मशीन, तो P, phi and Z। तो अभी शंट मशीन है आपकी, यहाँ phi कांस्टेंट है, P कांस्टेंट, phi कांस्टेंट, N इज वेरिएबल, Z अपॉन 60 इज अगेन कांस्टेंट, A इज कांस्टेंट। तो EB इज प्रोपोर्शनल टू N। बस इसको कंपैरेटिव स्टडी करके स्पीड निकाल। ये भी क्वेश्चन जो है इट इज इन द गेट, आप देख लीजिए गेट में आया हुआ है क्वेश्चन भी। नाउ द another point is that a single phase transformer of the rating 25 kVA supplies a 12 kilowatt load at power factor of 0.6 lagging. Additional load at the unity power factor in kilowatt that may be added before this transformer exceeds its kVA rating. अब आप ये बताइए, वो आपसे कह रहा है कि 12 किलोवाट फिर 25 kVA में से आप 12 किलोवाट सप्लाई कर रहे हो, पावर फैक्टर कितना 0.6 है आपका। अब वो आपसे कहता है व्हाट इट इज सेइंग कि आपको एडिशनल यूनिटी पावर फैक्टर इन किलोवाट आपको ऐड करना है। बड़ी वेरी सिंपल, ये देखिए ये न्यूमेरिकल है, हियर यू हैव टू राइट द आंसर, देयर विल बी नो मल्टीपल चॉइसेस, हियर यू हैव टू राइट द आंसर एंड यू हैव टू कैलकुलेट। तो मैं आपको बहुत सिंपल लॉजिक बताता हूँ आपको इसके अंदर। पावर क्या होती है, पावर हैविंग 2 कंपोनेंट्स, एक्टिव एंड रिएक्टिव। अब ये 20 किलोवाट 20 kVA है, 20 kVA में एक्टिव पावर कितनी होगी बताइए। अच्छा आप लोग बता नहीं पाएंगे, मैं कैलकुलेट करता हूँ। 25 मल्टीप्लाई बाय 0.6, 15 किलोवाट।
तो रिमेनिंग विल बी, और ये कितनी होगी 0.6 है, उसका फाइंड बाय करोगे, रिमेनिंग विल बी द नॉट अर्थमेटिक नॉट द सॉरी इट्स अ वेक्टर वाला काम होगा। तो अब 15 किलोवाट में सब 12 किलोवाट सप्लाई कर रहे हो, अब वो आपसे कहता है तो पावर विल बी व्हाट P प्लस I प्लस JQ, P इज रिएक्टिव एक्टिव पावर, Q इज रिएक्टिव पावर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वो बोल रहा है कितना P प्लस JQ इक्वल टू जो आपके 25 kV है। अब वो आपसे बोलता है कि इसमें हम कितना एडिशनल पावर यूनिटी पावर फैक्टर पे ऐड करें तो ये 25 को एक्सीड ना करे। तो बहुत सिंपल है, आप P जो P प्लस JQ है, Q में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर रहा है, तो P प्लस योर जो भी ऐड करना उसकी वैल्यू वो फाइंड आउट कर लो। सिंपल एक लाइन में इक्वेशन लिखिए, फाइंड आउट कर लीजिए, इट्स वेरी सिंपल। आप देखिए इतना आसान, ये 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो S इक्वल्स टू P प्लस JQ, ये आपका सप्लाई कर रहा है। अनदर पॉइंट इज दैट P विल बी नथिंग, कितना ऐड करें 12 किलोवाट इज एक्टिव पावर, 12 प्लस X जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस I J Q, Q जितना भी आप पाएगा सर निकाल 20 kV इंटू sin पाई करोगे अपने आप मिल जाएगा, बस सॉल्व कर लीजिए। इतना सा आसान क्वेश्चन, ये भी गेट में आ चुका है 2020 या 2019 में। सो हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने डेलिबरेटली इंक्लूड किया है। इट्स ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता है आपको। यहाँ पे वो बोलता है लुक शंट मशीन है, तो अभी मैंने आपको एक असम्पशन बताया कि शंट मशीन में EB इज प्रोपोर्शनल टू N, फाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं। यदि आप आर्मेचर रिएक्शन की बात करोगे डीसी मशीन में तो देयर विल बी अ चेंज इन फ्लक्स आल्सो, दिस क्वेश्चन इंक्लूड्स दैट आल्सो, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया हुआ है कि हम कंसेप्चुअली इसको देख पाए। So then what is happening, a 250 volt DC shunt motor has a resistance of 0.2 ohm and RF equals to 100 ohm. When motor is operated at no load at rated voltage, it draws an armature current of 5 ampere and runs at 1200 rpm. When the load is coupled to a motor, it draws a total line current of 50 amperes at rated voltage, with a 5% reduction in the air gap flux due to the armature reaction voltage, and drop across the brushes can be taken as 1 volt per brush under all operating conditions. The speed of the machine motor in RPM under this load condition is closest to. अब ये क्वेश्चन में कहाँ दो बात है जो मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया, EB के दो आपने फाइंड आउट कर लिए, तो EB is proportional here not only and it is EB is proportional to phi and N, और जो 5% ड्रॉप हो रहा है, तो you can have a relation between these two. First of all, this is the question. Second thing, वो शंट मशीन है, तो जो शंट में जो फील्ड करंट है वो कितना जाएगा, वो जाएगा हमेशा 2.5, 250 डिवाइडेड बाय 100, 2.5। तो देखिए फर्स्ट केस में व्हेन मोटर इज ऑपरेटेड एट नो लोड, इट ड्रॉज एन आर्मेचर करंट ऑफ 5 ओम। यहाँ पे आर्मेचर करंट दिया 5 ओम का, आपका टोटल लाइन करंट कितना हो गया 2.5 प्लस 5 इक्वल्स टू 7.5। In the second part, it is saying when it is connected to the load, coupled to the motor, मतलब लोड को कनेक्ट किया, it draws a total line current of 50 amperes। तो यहाँ आर्मेचर करंट कितना होना चाहिए 47.5, क्योंकि 2.5 आपका जा रहा है फील्ड में। बस यही डिफरेंस है, बाकी आप इक्वेशन आराम से कर सकते हो, विल गेट द आंसर वेरी इजी। अपन गलती कहाँ करेंगे, ये लाइन करंट को भूल जाएंगे और हम इसको 50 ही ले लेंगे आर्मेचर करंट, नहीं। या हम ऊपर वाले को भूल जाएंगे, हम उसको 5 एम्पियर ही ले लेंगे, नहीं, वो भी गलत हो जाएगा। उसको लाइन करंट मान के हम उसको 2.5 कर लेंगे, वो भी गलत हो जाएगा। और उसका ऑप्शन भी अवेलेबल होगा यहाँ पे, वो कैलकुलेट कर रखा होगा दोनों पार्ट से, 3 पार्ट तो मिल ही जाएंगे आपको, बट यू हैव टू केयरफुली अंडरस्टैंड एंड लर्न। अब मैं आपको बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल्स जो है वो कैसे सॉल्व करना। इट्स वेरी इजी भी। आप रीड द न्यूमेरिकल्स व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, टेक ए रफ बुक, साथ में होना चाहिए, एक लेफ्ट कॉर्नर पे एक लाइन खींचिए, व्हाट आर द गिवन क्वांटिटीज, राइट इट क्लियरली। नो लोड पे 5 एम्पियर करंट, वो क्या है, वो आर्मेचर करंट है। देन यू राइट फुल लोड पे या मोटर लोड पे लाइन टोटल लाइन करंट इज 50 एम्पियर। व्हेन यू सॉल्व द न्यूमेरिकल, जैसे आपका अटेंशन उस लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा जहां पे आपने गिवन क्वांटिटीज को लिखा हुआ है, आप ऑटोमेटिकली रिलेट करो कि आपके पास नॉलेज है, और व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट क्लियरली लिखिए। आप उसमें क्वेश्चन मांग रहा है कि मुझे ये फाइंड आउट करना है। ये इसलिए भी जरूरी है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो
कोई भी न्यूमेरिकल गेट में कम से कम सब डेटा जो दिया हुआ उसका एक एक मतलब निकलेगा, वो यूज होगा। यदि वो अजम्पशन भी दे रहे तो वो भी यूज होगा। पहले वाले क्वेश्चंस पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगलेक्ट द शंट ब्रांच इन नेगलेक्ट सर्किट, इसका भी मतलब है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो सब लिखिए। आप जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आपका अटेंशन ड्रॉ होगा, योर अटेंशन विल बी ड्रॉड कि अरे ये चीज तो छूट गई, ये तो यूज ही नहीं हुई हमारा, समथिंग इज रॉन्ग, एंड वो आपसे गलती करवाएंगे। दैट इज द आइडिया दैट यू हैव टू प्रिपेयर। नाउ यू स्टार्ट योर प्रिपेयरिंग योर सब्जेक्ट लाइक दिस, और करने की कोशिश करिए। सो ऑल द बेस्ट। मेरे को लगता है कि अब थोड़ा सा आज क्या मेरे डायरेक्टर के साथ में मीटिंग है 12:30, तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि अब अपने को क्वेश्चन आंसर होगी जरूरी है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो 10-15 मिनट आपको देना चाहिए कि आपसे बातचीत कर सकूं मैं। सो राधा रमन, प्लीज ओपन स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस, टू इंटरेक्ट विथ मी। यदि मुझसे मशीन में यदि कुछ भी पूछना चाहता है तो आई एम फील मीन्स आई विल बी फीलिंग गुड कि मैं आपके आंसर दे पाऊँ। Yes, I'm ready. Anyone from the audience side are there? Oh, wait. Yes. Anyone from the organized side कोई भी है वहाँ पे? हाँ, yes. हाँ, रमन जी बताइए। Hello. Sir, am I audible? Yeah, आप audible है, बिल्कुल है। So, any student wants to interact with sir related to the preparation strategy in the 11th hour, जैसे Tejaswini has asked that 2 months are remaining, and in this 2 months how to prepare. So sir has given a very good example, and how to use this last moments for the preparation of the gate exam. Sir has very explicitly given all those things. So now I request students to interact with sir if you have any questions. Definitely, I am here, and I really want to answer you guys because मेरी भी स्किल्स उसमें मुझे ही पता लगा कि मैं कितना जानता हूँ इलेक्ट्रिकल मशीन्स को। तो आप ही लोग हैं जो हमें बताते हैं कि आप कितना जानते हैं। तो प्लीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, और यू कैन राधा रमन, आप मेरा ईमेल आईडी भी शेयर कर सकते हैं बच्चों से, और यदि उनको कोई भी डाउट होता है yes sir, वो मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं कि सर मुझे इस पर डाउट है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर सच क्वेश्चंस। ये भी मैं चाहता हूँ। Actually, sir, it's always a pleasure to be at your class, because I remember the session in the IoT Atal Academy. It was really from that moment itself I had thought that I will call in our college, and the pandemic situation has enabled me to do so. Actually, I'm doing that what you want. I'm doing that, and I'm feeling very good. That's yes. Really good. Otherwise, if the pandemic would not have been there, so I think it would have been difficult for you also to travel from Bhopal to Nagpur and address our students. But so there are sometimes some good part also of something. So the COVID situation has allowed us to do these things, sir. Actually, but I want to say कि I really feel good कि जब मैं वहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट में हूँ, बच्चे मेरे सामने हो, क्योंकि I can see their faces and I can see कि वो कहाँ पे उलझ रहा है, मतलब कहाँ पे उसको डाउट है। that is मतलब 15-16 साल की मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस समझ पाया कि मैं बच्चों को जज करना चाहता हूँ कि वो कहाँ क्या मतलब क्या इश्यूज है उसके साथ में, और दैट वी हैव टू आंसर। हमें हर चीज आती जरूरी नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाई वी आर हियर। अपन सब वही काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली सर। Anyway, sir, so if at all we would be fortunate enough that we could host you in our college, we would be very happy to host you in our college in near future. I'll definitely come. Yeah. I'll definitely come, and I'll so I'm ready to help you out unconditional.
There is no condition, no boundary. You just call me. If it is possible for me, I'll definitely come. Otherwise, online I'm available, and I'll ready to justify or just clarify all your queries. Yes. Thank you very much. Sir, definitely we will be blessed to have you with us, and we would require your help in every time. And I'm Okay. sure that today, whatever the content you have delivered to the student, I think it would be really helpful for all the students, because I'll share the my most link. important, because sir, we are running this. Yes, sir. I'll, Actually, sir, we are running this expert lectures till now. We have invited yes. lectures till now. We have invited the experts from NITs, IITs, and Government College of Good. Engineering. So, Good. but none of them has shared the strategy of the question paper making. Like today, you have shared with us how the Uh, question papers are actually made. So, I uh, think that's very important from the देख लो learner's आप point of view, that how we should prepare मैंने for the प्रिपेयर thing. किया मैंने इसलिए प्रिपेयर किया इसलिए मेरे पास 10 दिन का टाइम लिया कि मैं प्रिपेयर कर सकूं भाई जस्टिफाई तो करें हम बच्चों की भाई आप कहाँ पे जा रहे हो और क्या आएगा तो यही आएगा अभी आप डिफाइंड होगा तो यही आएगा और आप आंसर कर पाओगे दैट इज फॉर श्योर Okay, so sir, we will conclude our lecture. I think थैंक यू students have no questions as of now, but definitely I'll share the email, your email ID with them, मेरा so that पीपीटी they भी can शेयर get connect with you. करो पीपीटी मेल करूंगा मेरा पीपीटी भी Yes, शेयर sir. Yes, करो sir. इट इज फॉर आवर ठीक है Sure, थैंक sir. यू Sure. So थैंक यू रमन please थैंक don't leave. Yes, sir. So, student, please don't leave the group. I'll be sharing the attendance link just now. Sir, from the Department of Electrical Engineering, I would sincerely thank you to accept our invitation and deliver a very explicit lecture on the electrical machines, as well as the preparation of the gate examination. यू I express my sincere gratitude for you. थैंक यू थैंक यू राधा Okay, रमन sir. थैंक यू योर मैनेजमेंट टीम Sir, तुलसी have a nice day. थैंक यू see you later and Thank you so much, sir. thank you I'm leaving Yes, sir. Thank thank you. you Okay, sir. Okay, sir. So attendance link is posted. You all have to give the attendance.